Rupa Goswami, now he describes Utsaha as one of the most important qualities for a devotee. We must have Utsaha, we must have enthusiasm to progress. In fact, I mean, you need enthusiasm to progress anything, right? In anything, anywhere. You are studying. Now, if you are enthusiastic about your studies, then it is much easier to study, right? If you are not enthusiastic and it's just because your mother is pushing you to study, then it's not so easy. Maybe she wants you to study something which you don't want to study. But you still have to find some enthusiasm to complete the studies. You want diploma. Right? Because you think with the diploma, then you get salary. Or ideally, you can go to US. Maybe some will go, maybe some will not. But you need that enthusiasm to at least complete it. So for anything, you need enthusiasm. So now you are coming here, then also you must have some enthusiasm, at least a little bit, to just take the journey. How did you come here? Train or bus? Yeah. Where from? Malda? Different places, yeah? Siliguri also, or no? Anyway, it's hot, right? So, to take that austerity, still, you must expect something from it to get from that. Otherwise, why would you do it? So, now, what is it that a person is looking for? What are we all looking for? We are, Peace? Okay. So what does peace bring you? It's a level of happiness, no? So we are looking for happiness, for satisfaction. And then, how do we achieve it? Different people may have different ideas. Some people, actually, like now most people, they will tell you, if you have a lot of money, you will be happy. Do you believe that? Yeah, probably yes, right? There was one guy in England. He was just the ordinary worker. And he used to time play lottery. And at some point, he won close to like £1 million.
So he was poor. He got a lot of money. So now he immediately said, "Oh, I'm going to enjoy myself now." तो बहुत ही गरीब था लेकिन उसके बाद इतना सारा पैसा आ गया तो उसने इमीडिएटली सोच लिया कि अब मैं बहुत एंजॉय करूंगा. So he quit his work. उसने अपनी नौकरी छोड़ दी. And he just went on. He bought some cars, he bought some motorbikes, and then just enjoying himself. उसने बहुत सारे गाड़ियां खरीदी, उसने बहुत सारे बाइक खरीदा, बहुत ही मतलब बेसिकली एंजॉय कर रहा था अपने जीवन को. Then the company, the lottery company, they found him after 3 months. They wanted to make an interview. जो लॉटरी कंपनी थी जिससे उसने जीता था तो उन्होंने उसको खोजा कि 3 महीने बाद ये कहाँ पे है, वो एक इंटरव्यू लेना चाहते थे उससे. So they were asking, so how are you enjoying your winning? तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आप तो फिर ये पैसा लेके आप क्या कर रहे हैं, कैसे आप इससे मस्ती कर रहे हैं. And he said, well, that day when I won the money, I think this is the worst day in my life. तो उसने कहा कि जिस दिन मैं पैसा जीता वो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का सबसे बेकार दिन था. And they were shocked. Why do you say so? वो सब शॉक हो गए कि यार आप ऐसा क्यों बोल रहे हो. Well, I did a foolish thing. Now, I thought that I can just go on and enjoy myself. तो उसने कहा कि मैंने एक बहुत ही मुफ्ता वाली काम की, मुझे लगा कि मैं जस्ट ये पैसे से अपने आप को एंजॉय कर सकता हूँ. So I was wasting money. तो मैंने पैसा जो है पूरा वेस्ट कर दिया. And I was thinking I can enjoy myself, so I stopped interacting with my friends. तो मुझे लगा मैं तो खुद से पैसा से आनंद प्राप्त कर सकता हूँ, तो मैंने अपने जितने भी दोस्त थे उनके साथ बातचीत सभी कुछ बंद कर दिया. Because I'm sure they will ask for some money. क्योंकि मुझे पता था जब भी उनसे बात करूँगा वो कुछ पैसा मांगेंगे मुझसे. I didn't want to give. और मुझे देना नहीं था. And now, look at me. I have nothing. और अभी मेरी हालत देखिए, मैं अभी कुछ भी नहीं. Money gone. पैसा चला गया. Friends gone. दोस्त भी चले गए. I feel very bad. मुझे बहुत ही खराब लग रहा है. So, to get a lot of money, that doesn't guarantee you that you are going to be happy. तो सिर्फ पैसा आने से ये गारंटी नहीं मिलता कि हम खुश हो पाएंगे. You need to know how to use money. हमें पता होना चाहिए कि हम पैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. See, I have a question for you. मुझे आप सबके ऊपर एक क्वेश्चन. Can you define a person, a rich person? How do you define a person who is rich and person who is poor? आप कैसे बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति अमीर है और कोई गरीब है? Anybody wants to try? कोई बोलना चाहेगा? How do you define someone who is rich and poor? कैसे बताएं कोई व्यक्ति अमीर है और कोई गरीब है? Maybe with his qualities, inner qualities, what he's having about. Okay. Rich people always don't give anything from his heart, but a poor person can give how much he has. See, okay. It's actually very simple. बहुत ही सिंपल है. When you have a person and he has a lot of money, जब कोई व्यक्ति है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, but he is not satisfied with what he has, he wants more and more. लेकिन वो संतुष्ट नहीं है जीवन में, उसको और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए. He does not have enough. उसके पास संतुष्टि नहीं है, मतलब उसको लगता है और चाहिए. Is he rich or poor? वो अमीर है या गरीब है? He's poor. He can have millions of dollars, but he doesn't have enough. Not satisfied. So he is poor. ऐसा व्यक्ति poor है या गरीब है. Now you have a person who has little bit of money, just enough to go through his life. और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास थोड़ा सा ही पैसा है लेकिन उसके जीवन के लिए वो sufficient है. But he has enough. लेकिन वो संतुष्ट है. He does not want more. उसको और ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए. Is he rich or poor? वो गरीब है या अमीर है?
So the definition lies in your consciousness. तो ये जो गरीब अमीर का जो डेफिनेशन है हमारी चेतना के ऊपर डिपेंड करता है. If you are satisfied with your situation, then you are a rich person. अगर हम परिस्थिति से संतुष्ट हैं तो हम अमीर हैं. If you are not, then you are disturbed. You need more, you need this, you need that. And you will never be satisfied. और अगर हम बहुत ही डिस्टर्ब हैं और हमें और चाहिए तो हम अमीर नहीं हैं, गरीब हैं. You see, now in India, then there is very much given respect to sadhus. इंडिया में साधु को बहुत सारा सम्मान दिया जाता है. Why is it so? ऐसा क्यों है? What is the difference between sadhu and then not a sadhu? तो साधु और जो साधु नहीं है उसमें क्या अंतर है? Sadhu should be satisfied with the situation he is in. He should be satisfied with whatever Krishna provides. साधु को अपने परिस्थिति से जो भी परिस्थिति है उससे संतुष्ट होना चाहिए. जो भी भगवान कृष्ण उसको दे रहे हैं उससे उसको संतुष्ट होना चाहिए. So that's the best thing. If you can be satisfied with whatever you are provided for. तो यही सबसे अच्छी परिस्थिति है कि आपको जो भी मिल रहा है अगर उससे आप संतुष्ट हैं तो ये सबसे अच्छी परिस्थिति है आपके लिए. But it's very difficult. लेकिन ये बहुत ही कठिन है. We want more than what is being given. लेकिन हमें तो और चाहिए. Why is that so? ऐसा क्यों है? Why are we having these desires to enjoy ourselves? हमारे अंदर ये इच्छाएं क्यों आती कि हम और अपने आप को और ज़्यादा एंजॉय करें. And there is no limit to how much you want to enjoy yourself. और कितना हम एंजॉय करना चाहते हैं इसमें कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है. You can limit yourself, but if you don't want to, you don't limit yourself. अगर हम चाहें तो अपने आप को लिमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं चाहें तो लिमिट नहीं करते हैं. The mind can dream up anything. जो मन जो है ये कुछ भी सोच सकता है. And you, each of us, all of us, we have individual free will. और हम सबके पास खुद की फ्री विल रहती है. फ्री विल How is it? स्वतंत्रता रहती है, स्वतंत्रता. Okay. Now, and you can desire whatever you want. और हम जो भी चाहें वो इच्छा कर सकते हैं. In fact, you can even try to execute it. और हम उसको प्राप्त करने की कोशिश भी कर सकते हैं. Like an example, you can dream of, I can fly. जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सोच सकते हैं कि मैं उड़ सकता हूँ. You can go up the samadhi, हम समाधि तक जा सकते हैं. and if you want, you can jump off and fly. समाधि वाले ये मंदिर में बता रहे हैं महाराज कि मंदिर के ऊपर में जा सकते हैं और ऊपर से कूद के उड़ने की कोशिश कर सकते हैं. You can dream up, it can be desire. ये भी हम सोच सकते हैं कि हम ऊपर जाके कूदेंगे और उड़ जाएंगे. Now, is it wise to jump off the samadhi and thinking that you are going to fly or not? तो ये सोचना है कि मैं ये मंदिर के ऊपर जाके कूद के मैं उड़ सकता हूँ, ये बुद्धि की बात है या नहीं? What is the probability that we are going to fly? तो इस बात का क्या प्रोबेबिलिटी कि हम उड़ पाएंगे? ऊपर से कूद जाएंगे तो फिर उड़ पाएंगे. And what is the probability we are going to just fall down and kill ourselves? और इसकी क्या संभावना है कि हम ऊपर जाके अगर कूदेंगे तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे. So you have to use your intelligence before you give space to your mind to dream up anything. इसीलिए महाराज जी बता रहे हैं कि हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि मन कुछ भी ना सोचे. ताकि Nowadays, I mean, in India, it's very common that people like to take selfies, which even like in dangerous situations. तो महाराज जी बता रहे हैं कि इंडिया में काफी कॉमन है कि लोग बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में जाके सेल्फी लेना चाहते हैं, समुद्र के पास.
There was some guy, now he's taking selfie with the train coming from the back. एक व्यक्ति सेल्फी ले रहा था और पीछे से ट्रेन आ रहा था, उसको वो वैसा पोज किया। And he was hoping that now he will take as close as possible. तो सोच रहा था जब एकदम ट्रेन पास आ जाएगा तब मैं सेल्फी लूँगा। But he got, ran over by the train. लेकिन उसकी चटनी बन गई। What can you do? क्या कर सकते हैं? You don't use your intelligence, and you just let the mind to dictate you what you may think it's very satisfying. तो ये एक एग्जांपल है, महाराज जी बता रहे हैं कि जब हम अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, मन को कुछ भी सोचने देते हैं कि इससे हमें खुशी मिलेगा। So we cannot let the mind go wild. हम मन को जानवर जैसा एकदम खुला नहीं छोड़ सकते। That will be stupid. तो बहुत ही मूर्खता की बात होगी। We need to know where are the boundaries. हमें पता होना चाहिए कि हमारा लिमिटेशन या बाउंड्री कहाँ तक है। No. Enjoyment, okay, but within boundaries. एंजॉयमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका बाउंड्री पता होना चाहिए, कहाँ तक हम एंजॉय कर सकते हैं। We go beyond the boundaries, then the mind can dream it, but the body, the gross body, may not handle it. तो हम अगर बाउंड्री के बाहर जाके एंजॉय करने की कोशिश कर सकते हैं, तो मन वैसा सोच सकता है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन शरीर साथ नहीं देगा। You see, like people, drug addicts. जैसे कि लोग ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, है ना? ड्रग का नशा करते हैं। They start with little drugs, तो थोड़े से ड्रग के साथ शुरू करते हैं। and then they keep increasing because they want to have more enjoyment, or it is the same amount like the first time. तो वो ड्रग की जो मात्रा है उसको बढ़ाते जाते हैं कि और एंजॉयमेंट चाहिए, और एंजॉयमेंट चाहिए। No. But at some point, they just take so much that they overdose. लेकिन एक स्तर पे आके वो इतनी मात्रा ड्रग्स ले लेते हैं कि वो ड्रग ओवरडोज हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं। So you have to use your intelligence before you let the mind dictate to you. तो वही महाराज जी बता रहे हैं कि मन कुछ भी सोच सकता है, लेकिन हमें बुद्धि का प्रयोग करके मन को एक जगह पे रोकना चाहिए, यहीं तक आप कर सकते हो। But the problem is that when we get the desire, we get emotional and we get excited and we don't use our intelligence. लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जब हमें ये जो ऐसी सोच आते हैं, हमें ऐसी इच्छाएं आती हैं, तो हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है और हम बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाते। So we should use the intelligence before getting into the excitement. इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कुछ करने से पहले हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। Because that's the time when you can still use it. क्योंकि वो एक समय जब तभी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ करने से पहले बुद्धि का प्रयोग करें। And now, see, the Shastra actually very clearly describes why we are getting into these nonsense desires. तो जो शास्त्र है वो काफी साफ साफ बताता है कि हमारे अंदर इतनी जो क्या बोलते हैं गंदी इच्छाएं कभी-कभार आती है, वो क्यों आती है? I'm sure all of you experienced at some point that you want to do something right, but the mind tells you something else, and you know you are doing nonsense, but you still do it. तो हम मुझे लगता है आप सभी को कभी ना कभी एक्सपीरियंस होगा कि हम कुछ करना चाहते हैं और हमें पता है कि एक गलत काम है हम जो करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको कर बैठते हैं। You don't want to necessarily, but you are pushed to do it. हम वो जानते हैं कि गलत काम है, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम वो कर बैठते हैं। You know it's wrong. You know you are going to suffer the consequence, but you still do it. हमें पता है ये गलत है, हमें पता है हमें इससे भोग मतलब इससे पाप मिलेगा, लेकिन फिर भी हम वो कर बैठते हैं। इसका फल मिलेगा, लेकिन फिर भी हम कर बैठते हैं। Have you experienced that? कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है, ऐसे कार्य जो हम कर बैठते हैं, जो गलत हमें पता है? Did you ever think, why is it like this? कोई सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि हम नहीं करना चाहते हैं, फिर भी कर बैठते हैं? Can you do something about it? क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? Can you control your mind? क्या अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं? Have you think about that? आपने इसके बारे में कभी सोच विचार किया है? It is possible. ये पॉसिबल है। There are ways now how you can do it. But first you have to understand what is the root problem. तो ये तरीके हैं बहुत सारे जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जो प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है, उसको समझना पड़ेगा। See,
we are a soul, Atma. हमें समझना ये कि हम आत्मा हैं. Then, to be here in the material world, then we possess subtle body, linga sharira. तो हम जब ये भौतिक संसार में तो हमारे पास स्थूल शरीर होता है. Linga. लिंग का शरीर. And there is another one, the stula sharira, which is the gross body. और हमारे साथ उसके साथ साथ ग्रॉस बॉडी भी होता है. So, as we move, I mean, you are born, right? You grow up, eventually die, and move to another body. तो जैसे हम बचपन में छोटे रहते हैं, उसके बाद बड़े होते हैं, उसके बाद फिर बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, और फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं. So the stula sharira keeps changing. तो ये स्थूल शरीर है, ये चेंज होते रहता है. The linga sharira, which is the mind, intelligence, the consciousness, and false ego. और जो लिंग शरीर है, सटल बॉडी, उसको बोलते हैं मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना. That stays with us, and then it keeps moving with us while we are in the material world. तो ये हमारे साथ ही रहता है, आत्मा के साथ रहता है, और एक शरीर से दूसरे शरीर में हम लोग जाते हैं, तो ये भी हमारे साथ जाता है. And as we are doing activities in the stula sharira, now here in the material world, और जैसे हम इस स्थूल शरीर, हमारा ये शरीर, इससे हम जो भी कार्य करते हैं इस भौतिक संसार में, we are creating something which is called anartha. तो इससे हम जो भी कार्य करते हैं उससे हम लोग एक चीज को प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं अनर्थ. We are doing wrong things, and we get more and more taste for doing it. हम गलत कार्य करते हैं और हमें गलत कार्य करने का जो है टेस्ट मिल जाता है. The taste for it's the anartha. तो ये जो टेस्ट मिलता है हमें गलत कार्य करने का, इसको अनर्थ बोलते हैं. So more we get into nonsense, more taste for nonsense we get. तो जितना हम गलत कार्य करते हैं उतना हमें ज़्यादा टेस्ट मिलता है गलत कार्य करने का. The anartha in the Shastra is described as papa bija. ये जो अनर्थ है इसको शास्त्र में ऐसे बताया गया, इसको बोलते हैं पाप बीज. It's the seed of our desires. ये जो है बीज है हमारी इच्छाओं का. So they are there, and we may not be aware of their presence. ये जो अनर्थ है हमारे अंदर है, लेकिन हमें पता नहीं हो सकता है कि है या नहीं है. You see a small child. अब एक छोटे बच्चे को देखिए. Now we say children are innocent. हम लोग बोलते हैं कि जो बच्चे हैं वो साधारण इनोसेंट होते हैं. They seem like, but the anarthas are still in the heart, but they are not manifested yet. तो जो बच्चे होते हैं वो मासूम दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर भी अनर्थ है और वो अभी तक बाहर निकल के नहीं आया है. As the child grows up, then naturally sex desire will come. जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो नेचुरली उसके अंदर ये जो सेक्स डिजायर है वो आता है. For enjoyment, money, or so many things start manifesting. एंजॉय करने की वासना, एंजॉय करने की इच्छा, पैसा अर्जन करने की इच्छा, इतने सारे एंजॉयमेंट के जो तरीके हैं उसके अंदर वो विकास लेते हैं. So it depends on the anarthas in our heart that we get involved in nonsense or not. तो ये जो अनर्थ है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम गलत कार्य करते हैं तो हमारे अंदर अनर्थ बढ़ता है. Have you noticed that some people, then they are more in control of their senses, and some people are less in control? देखो ये कुछ लोग के पास जो अपने इंद्रियों को वो वश में कर सकते हैं और कुछ लोग एकदम भी नहीं कर सकते. Some people are interested in some things, and some people in different things. कुछ लोग एक चीज में इंटरेस्टेड रखते हैं, कुछ लोग किसी और चीज में इंटरेस्ट रखते हैं. This is our conditioning. ये जो है हमारा कंडीशनिंग है. And the conditioning is given by the anarthas. और ये जो कंडीशनिंग है कि एक चीज को पसंद करना, दूसरे चीज को पसंद ना करना, इसको कंडीशनिंग बोलते हैं और ये अनर्थ से आता है. So the process of how we can start controlling our mind, तो ये प्रोसेस है कि कैसे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं. it's to work on the root. तो इसे जड़ पे काम करना चाहिए. It comes from the anartha. हमें अनर्थ पे काम करना है. See, like it's a difference between when you have allopathic medicine or you have Ayurvedic medicine. तो
एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में क्या अंतर है? You have fever, you come to a doctor. आपको बुखार लग गया, आप डॉक्टर के पास आए. Then you come to allopath, what does he give you? अब एलोपैथी के पास जाएंगे तो क्या देगा आपको? Some paracetamol. कुछ पैरासीटामोल देगा. No. Fever, okay, you have fever, you don't want to have fever, give paracetamol. बुखार है नहीं है, पैरासीटामोल देगा. But sometimes fever is good. I mean, why the fever is there? तो कभी-कभार बुखार जो वो भी अच्छा है हमारे शरीर के लिए. बुखार होता क्यों है? When you get cold, the body creates fever to heat up, so then you get rid of the cold. तो हमारे कभी-कभार जुकाम ये सब हो जाता है, ठंडा लग जाता है, तो बॉडी क्या करता है, मैकेनिज्म है, बॉडी का मैकेनिज्म उसको बॉडी को हीट कर देता है ताकि वो जो ठंडा है वो चला जाए शरीर से. If you suppress the fever, then you don't help yourself. अगर हम उस बुखार को मतलब सप्रेस कर देते हैं, दवाई ले ज़्यादा लेके सप्रेस कर देते हैं, तो जो हीट में वो कूल हो जाता है, तो फिर ठंडा नहीं आता शरीर से, शरीर के खत्म होता है. When you get sick, so some virus or some bacteria, the fever is there to help to kill that virus. तो जब हमें कुछ वायरस या फिर बैक्टीरिया अंदर में घुस जाता है, तो फीवर से क्या होता है, शरीर गर्म हो जाता है और उससे वो बैक्टीरिया मर जाता है. Of course, sometimes the fever goes very high and that's very dangerous, so it has to be brought down. तो ऐसा भी होता है कभी-कभार फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो डेंजरस हो जाता है, उसको फिर कंट्रोल में लाना. Anyway, point is that the allopath, they work on symptoms. तो जो महाराज जी बता रहे कि मेन पॉइंट क्या है कि जो एलोपैथी है वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है. ऐसा हो रहा है तो ये कर दो, जड़ पे काम नहीं करते. Then you go to Ayurvedic doctor with a fever, what is he going to do? आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे, बुखार लगे तो क्या करेगा? He is going to take your pulse and he is going to tell you your doshas, they are disturbed. तो वो आपका जो नाड़ी इसको वो करेगा, मापेगा, उसको बताएगा कि आपके शरीर में ये सब दोष है, ये प्रॉब्लम है. He is not concerned about like the fever or not, or he is concerned about are the doshas in balance or not. तो वो क्या करेगा, वो आपको बुखार है या नहीं उससे उसको मतलब नहीं, वो चलेगा, वो देखेगा कि आपके जो शरीर में दोष है वो बैलेंस में है कि नहीं, कंट्रोल में है कि नहीं. Because the balance of the doshas, this is the root of your well-being. क्योंकि जो दोष का जो बैलेंस है वही है हमारा रूट कॉज वेलबींग का सब बात. So they work on the root. तो इसलिए वो जड़ पे काम करते हैं, आयुर्वेदिक दवाई जड़ पे काम करते हैं. So the same thing, if we want to get into controlling the mind, we have to work on the root. तो सिमिलरली अगर हमें जैसे बुखार को काम करने के लिए हमें जड़ पे काम करना है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए भी जड़ पे काम करना पड़ेगा. Some techniques know what to do, how to do. They may work for some time, but ultimately they will fail. मतलब टेक्निक देखते हैं, बाहर के लोग बहुत सारे बताते हैं ये करो वो करो, तो कुछ दिन के लिए काम करता है, लेकिन अल्टीमेटली कि जड़ पे काम नहीं करता है तो फेल हो जाता है. Because the root is the anartha. क्योंकि रूट क्या है, अनर्थ है, तो अनर्थ पे काम करना है. So to get rid of the anarthas, this is the goal. तो जो ये अनर्थ को अपने जीवन से हटाना, यही जीवन का उद्देश्य है. In the process of devotional service, it is called anartha nivriti. तो ये जो भक्ति का जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति. Removing most of the anarthas, so then we can actually control the mind and engage the mind and intelligence in devotional service. तो ये जो अनर्थ से हम हटा देते हैं और मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करके भक्ति में सेवा में लगाते हैं. So Chaitanya Mahaprabhu here recommends the best way how to get rid of the anarthas. चैतन्य महाप्रभु जो बताते हैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अनर्थ से मुक्त होने का, It's engaging in Harinam Sankirtan. हरिनाम संकीर्तन में भाग लेने से ऐसा सबसे ज़्यादा अच्छा है प्रोसेस. And be focused on when you chant the holy name. और हम जब फोकस मतलब ध्यानपूर्वक हरिनाम का जप करते हैं, You get much more benefit when you actively chant and you are focused on hearing the name than just standing there and do nothing. तो जब आप हरिनाम का जप करते हैं तो सुनते हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है, बल्कि ऐसे ही खड़े रह के कुछ नहीं करने. So since you are already here in Mayapur, which is Holy Dham, you are going to be here for 2 days. So take the opportunity and try to engage yourself in all the devotional activities, whatever you can. तो आप लोग सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं कि आप लोग मायापुर में हैं. तो आप लोग जो भी यहाँ पे भक्तिमय कार्य होंगे उसमें आप अपने आप को एंगेज रखिए 2 दिन के लिए. And
try to always chant the Maha Mantra. और हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की कोशिश कीजिए. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Hari Bol.